Welcome back to my channel. Hello students. Today I am proceeding with the next topic of the nutrition, that is human digestive system, right? The human digestive system. In this human digestive system, as you know already, human digestion, it involves various steps. First, that is the ingestion. When ingestion means taking in of the solid food inside your mouth, the process by which we take solid food from outside inside, we pour the food inside the mouth, the process is known as indigestion. Next comes your digestion. When we ask digestion, means breaking down of the complex food material through various chemical process with the help of the enzymes into the simpler forms which the body can absorb. Breaking down of the larger food particles into the smaller one so that our body can absorb through it. It occurs through various chemical enzymes present in our body. And after it is broken down, the next step, that is assimilation, means this digested smaller parts of the food particles, that's the carbohydrate, protein, fats, they were absorbed by the intestinal wall. That is the absorption occurs over there. Means they were absorbed by the intestine. Assimilation, when they interact, they form a part of the body. They help us for the growth. They help us in wearing and tearing of the tissues. They help to grow the energy, and the rest of them, they were accumulated as the fats. They are accumulated in the adipose tissues. Proteins, either they are utilized or they are help in making the new cells of the body. DNA and RNA formation of the cells are there, and excess glucose is stored in the form of glycogen in our body, and time to time it is released through it, right? So now they are the various steps. First, as your digestion takes place in the alimentary canal. Alimentary canal starts from mouth till anus. All these mouth, esophagus, stomach, duodenum, ileum, that is the small intestine, large intestine, rectum, they are the different parts of the different parts of alimentary canal where the digestion occurs in the human being. Now your digestion first starts from the mouth. In the mouth, when we take a bite of the food and put it inside the mouth, they were the larger particles. Now these larger particles are with the help of our teeth, tongue, mouth cavity, buccal cavity, that is one and the same. It is chewed, masticated. These larger particles are broken down into the smaller particles. They are larger one, बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे पीसेस के रूप में चेंज होते हैं, जिसे हम कहते हैं mastication. And it is also termed as the mechanical digestion, means mechanically by cutting and chewing the food from the teeth. The white teeth, you say, incisors, canine, premolars, and molars, they are present. That I have already told you in the previous class. In my previous video, you are able to see the types of the teeth, the structure of the teeth, and the function. That they help in cutting the food, grinding the food, masticating the food. खाने को पीसते हैं जबरदस्ती, premolars or molars. When it is solved and it forms a bowl, or it is ready for the further digestion. इसके बाद in your mouth salivary glands are present. Now these salivary glands, they secrete saliva. Salivary glands are present. Now these salivary glands, they secrete saliva. Saliva, it contains an enzyme, salivary amylase, that is known as ptyalin. Now this salivary amylase starch, salivary amylase acts on starch and it changes starch into the maltose. So the further digestion it occurs. Saliva, it is antibacterial. It mixes up with the food properly. It makes the food material, ये food को एक बाउल के फॉर्म में कंट्रोल करता है. इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको कन्वर्ट करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट एनी, बिकॉज इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो उसमें इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने की भी हद होती है. और ये उसको मेस्टिकेट, म्यूकस होता है, उसको सलाइवे करता है, एंड इट लुब्रिकेट्स द फूड प्रॉपर्ली, राइट? So that what happens in your mouth. Now after mouth, the food move into the
esophagus tube. Now this esophagus tube is a small, though here no digestion occur, it is a small simple tube, 25 centimeters long tube it is, and inside there the mucous glands are there, and these mucous glands, they secrete mucus so that food becomes lubricated and it is sifted easily. Now inside there were the circular muscles, a wave-like motion, one like the other, like this. As the food moves, this wave-like motion occurs. Now this wave-like motion, it is known as peristalsis. And through this peristalsis, food easily slipped from the esophagus tube into the stomach. Now at the end of the esophagus tube, there is the esophageal sphincter muscles are there that closes so that food from the stomach does not comes back into the esophagus tube. देखिए स्टमक से esophagus tube में फूड वापस नहीं जाए, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं एक्सेस फूड हो गया है, जलन हो रही है, उबकाई सी आ रही है, तब क्या होता है, तब ये esophagus मसल्स खुल जाते हैं और वॉमिटिंग होती है. तो वॉमिटिंग मीन्स स्टमक इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट फूड. इट हैज सम इन्फेक्शंस इनसाइड आवर बॉडी व्हिच आवर बॉडी कैन नॉट रेजिस्ट. जब रेजिस्ट नहीं कर पाती है बॉडी, तो जो इससे आपको वॉमिटिंग होती है, राइट. Now from here the food comes into the stomach. In the stomach, it is a J-shaped structure, lies in the abdominal cavity. In the stomach, it is first divided into the three parts: cardiac, fundic and pyloric. Cardiac part, that is in the beginning of this one, esophagus. Here esophagus sphincter muscles are present, and here cardiac sphincter muscles are present, that closes the chamber. It opens then only when cardiac sphincter muscles open. जब cardiac sphincter खुलती है, और fundic ये large body, और जो यहाँ पर ये है ये पाइलोरिक है, इसको पाइलोरिक पार्ट है, ये पाइलोरिक है, ये कार्डिक है और ये फंडिक पार्ट होता है. फंडिक, पाइलोरिक और कार्डियक, ये पार्ट्स स्टमक के होते हैं, और ये एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज लाइंग विद द गैस्ट्रिक, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्टमक, and in these gastric glands they secrete gastric juice. Gastric juice में कैसे, mucus, pepsin और HCl. Mucus, it is secreted by the mucus cell present in the stomach wall. Chief cells are present. They cells means specific cells, only specific cells they secrete particular specific thing. Mucus cells mucus secrete करते हैं, chief cells pepsin secrete करते हैं, और parietal cells ये HCl secrete करते हैं. तीनों का अलग. म्यूकस, इट लाइंस द कैविटी. म्यूकस इसकी कैविटी को लाइन देते जिससे कि स्टमक वॉल डाइजेस्ट ना हो. जो स्टमक वॉल में मस्क होते हैं, इट वाज नॉट सपोज टू बी डाइजेस्टेड एंड इट रिमेन्स एज इट इज. मींस इट प्रोटेक्ट्स द वॉल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम इनसाइड. स्टमक की वॉल. पेप्सिन, इट इज सीक्रेटेड एज पेप्सिनोजन. पेप्सिन, it is secreted as pepsinogen, and when this pepsinogen comes in contact with the HCl, then this pepsinogen changes into the pepsin, and this pepsin, in the stomach only the digestion of protein occurs. This acts on protein, and here HCl secreted, so the medium of the food in the stomach is acidic. All the because pepsin enzyme is active only in the pepsin, as well as renin is also there. Now this renin enzyme, it is secreted in children, not in adults. ये सिर्फ बच्चों में होती है, जो कि बच्चे दूध पीते हैं, तो उसमें जो रेनिन होता है वो केसिन को पैराकेसिन में चेंज करता है, काइम होता है, जिससे कि काइम मींस बाउल ऑफ द फूड इज फॉर्म सो दैट इट इज फर्दर रेडी फॉर द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में चेंज होते हैं पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंट में और एसिडिक मीडियम. तो सिर्फ स्टमक में दे गैस्ट्रिक जूस, gastric glands are present. Gastric glands secrete gastric juice. Gastric juice contains mucus, HCl and pepsinogen. This pepsinogen in presence of HCl changes into pepsin. Pepsin acts on protein, changes into proteases and peptones. Renin, that is the milk protein, that the casein, it acts into paracasein in presence of the renin enzyme, but it is present only in children, not in the adult. So that is what happens in the stomach. Now from the stomach, through pyloric sphincter, food bowl by bowl, after it's all, it chyme. Chyme is the means partially digested food, that is known as chyme.
When you ask chyme, what is chyme? Partially digested food is known as chyme. Now here chyme, the food comes into the small intestine, the first part of the small intestine, that is known as the duodenum, and in the duodenum, pancreatic duct present. It opens over. Now this pancreatic duct, it has pancreatic juices. Along with the pancreatic, in the liver, gallbladder is present. Through cystic duct, it passes into the gallbladder bile juice. Now bile juice, bile pigments, it is the remnants of the, by breaking down of the RBCs. Iron is utilized in making the new RBCs, and leftover is secreted as a bile, and that helps in the digestion in small intestine, right? Now in the small intestine, in the duodenum, pancreatic duct opens. Now this pancreatic duct, it receives pancreatic juice. Now this pancreatic juice, as I told you already, it contains bile pigments as well as enzymes present in the pancreas, that is amylase, trypsin, amylase, trypsin. These enzymes are present which are acts on the day. This small intestine, actually it is 7 meters long and 2.5 cm. ये पतली होती है, नैरो और लंबी होती है, जिससे कि खाना इसमें दे, स्टमक में सिर्फ डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और उसमें भी इलियम पार्ट में. ड्यूडेनम में सिर्फ डाइजेशन होता है. ड्यूडेनम में क्या है? पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम. तो सबसे पहले यहाँ पर जो फैट का एमल्सिफिकेशन हुआ स्टमक में, स्टमक में क्या हुआ, इसमें जो बाइल जूस आया, बाइल जूस में स्टमक में फूड अल्कलाइन मीडियम में था, अब सॉरी एसिडिक मीडियम में था. जब फूड एसिडिक मीडियम से यहाँ पर जब ड्यूडेनम में आएगा, नाउ द एंजाइम्स व्हिच आर सीक्रेट, जो एंजाइम ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक डक्ट की जो एंजाइम्स होंगी वो इसमें पैंक्रियाटिक जूस होंगे. पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें ये ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम्स आपके जो है इसमें पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं. और प्लस आपके इसके वॉल से जो होते हैं वो ट्रिप्सिन, वॉल से काइमोट्रिप्सिनोजन सीक्रेट है. काइमोट्रिप्सिनोजन अल्कलाइन मीडियम में ये काइमोट्रिप्सिन में चेंज होता है. जो ये काइमोट्रिप्सिन जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है. तो सबसे पहले जो इसमें बाइल जूस होता है, बाइल जूस का काम क्या है? ये फैट जो है बाइल को एमल्सिफाइड फैट में चेंज करता है. एमल्सिफाइड फैट मींस लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स, they are broken down into the smaller particle so that enzymes can act on them. ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है जिससे कि उनके ऊपर एंजाइम्स का एक्शन हो सके. The enzymes are able to take part over there, and due to that and this takes place in the alkaline medium. इसके अलावा जो एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में चेंज करने का काम है ये भी बाइल जूस करता है. तो इसमें जो काइम फूड आया, जो फैट हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उससे काइम, तो ये जो काइम को, एसिडिक काइम को भी ये अल्कलाइन काइम में चेंज करता है. तो जब ये अल्कलाइन काइम में चेंज कर गया, सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइल, ये दोनों चीजें इस बाइल जूस में प्रेजेंट होती है. तो उससे जब अल्कलाइन, तब जब अल्कलाइन काइम में चेंज होगा तब इसके पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स इस पर एक्ट होंगे. अगर ये अल्कलाइन मीडियम में चेंज नहीं होगा तो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स फूड के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे. They are not able to act over there. They will act only when the medium is made alkaline. इसमें क्या होता है, जो इसमें प्रोटीन आपके स्टमक में पैसिन ने प्रोटीन को प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स में चेंज किया होता है. इसमें ये पैंक्रियाटिक जूस, ये जो भी एंजाइम्स हैं, दे आर ऑल सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक जूस. ये पैंक्रियाटिक जूस के ही सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. इसमें ट्रिप्सिन अल्कलाइन है, इसको पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स आगे जाकर के डाइपेप्टाइड्स और मोनोपेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं और फिर वो अमीनो एसिड्स बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं. स्टार्च जो प्रेजेंट होता है इसका माउथ में होगा सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज के जो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्ब्स थे वो स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में ये माल्टोज में चेंज होंगे. और एमल्सिफाइड स्ट्रेप्सिन inhibitor, they changes into fatty acids and glycerol. Strepsin, ये lipase enzyme. Lipase is also the fat digestive enzyme, ये भी present होता है. ये emulsified fats, they may be act on lipase, and that also changes into
फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। इसके जो एंटाजोस म्यूकस सिक्रीट होता है यहाँ भी, जो कि इंटेस्टाइनल वायरल को प्रोटेक्ट करता है, जिससे तो पार्शियली डाइजेशन यहाँ स्टार्ट होता है, ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है पूरे, सिर्फ यहाँ पर बेजल्स प्रोड्यूस का बिल्कुल। अब यहाँ के बाद नाउ द नेक्स्ट मूव्स इनटू द इलियम पार्ट. Ileum, that is the now here, intestinal juices are secreted. These intestinal juices, they are also active only in the alkaline medium. इसका मीडियम धीरे धीरे चेंज होता जाता है, और जो फर्दर एंजाइम्स होते हैं ये भी अल्कलाइन मीडियम में ही चेंज होते हैं, राइट? Now, intestinal juices secreted in the ileum. These intestinal juices secreted by the ileum, they had the enzymes as polypeptidase, that is the erepsin. It is a protein digestive enzyme. It acts on polypeptides which are formed in the duodenum. These polypeptides changes into dipeptides, and dipeptides further they changes into amino acids in the presence of the enzyme erepsin. Now here intestinal juice, that is the amylase. This intestinal amylase, it changes maltose in the presence of the enzyme maltase into the glucose, because that has already changed with the help of the enzymes over there in the duodenum where it has been acted. And sucrose, that is the cane sugar. This cane sugar, sucrase enzyme that changes sucrose into glucose and fructose. Lactose, that is the milk sugar, in the presence of the enzyme lactase, it changes lactose into glucose and galactose. Emulsified fats which are left over on there, with the help of the enzyme lipase, they changes into fatty acids and glycerol. With this, the intestinal juices secreted, mucus is already secreted over there throughout the alimentary canal. This mucus makes it slimy, viscous, so that they can easily script and movement can be done easily over there from there one place to the another. The movement was supposed to be done very easily. After all these things, they are in the here in the ileum. Intestinal walls, various finger-like projections are present. These finger-like projections are known as the villi signal is the villus. Now here you see the red color. It is the lacteal lymph duct, also known as lacteals. They help in transportation of the fats. Now here they were enriched with the blood capillaries. This black color shows it is the blood capillary. These blood capillaries, they absorb the process, simple process of diffusion. All this digested food which is digested in the throughout the tract of the alimentary canal, it is absorbed by these intestinal epithelial layer. Their columnar epithelial cells are present in the inner lining. With that, they absorb the digested food. These are the blood capillary, and through this hepatic portal vein. In the hepatic portal vein, all the veins coming out from the different parts of the alimentary canal, and then they goes into the liver. So that all digested food, proteins, they help in the growing of the cells or tissues, or worn out cells of the body, they help in the production. They also helps in the formation of hormones, enzymes, they are formed by the amino acids. And if it is your leftover proteins, their deamination takes place in the liver, from which they are broken down into the ammonia is given out. Ammonia is highly toxic substance. It cannot be retained in the body for much time. So soon it changes, liver changes ammonia into urea, which is less toxic, can be retained in the body for some time. So after this urea along with the blood through the portal vein, it goes into the kidney, filtered and removed out of the body. Whereas glucose, it is absorbed, goes to the kidney. Excess glucose changes into glycogen with the help of the insulin hormone, and whatever the content of glucose required in the blood, only that is maintained. If concentration of glucose decreases in the blood, then glycogen stored in the body with the help of the glucagon, glycogen changes into glucose and mix up in the blood to maintain the blood sugar level in your blood, sugar level in the blood, जिससे कि शुगर लेवल को मेंटेन करता है. तो यहाँ पर पूरा डाइजेशन हो गया है, एब्जॉर्प्शन है. अब
जो लिक्विड पार्ट ऑफ द फूड, जो कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा, जो एपिथेलियल सेल, तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। अब जब फूड यहाँ से लिक्विड स्टेट से आगे आएगा, then in the cecum. In the cecum, the mucus is secreted, the wall, so that food can move out easily over there. पूरे रस में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, जो म्यूकस सीक्रेट होता है तो उसको लुब्रिकेटेड करता है। लुब्रिकेशन से इसका मूवमेंट फास्ट होता है एंड एक्सेस वाटर इज एब्सॉर्ब, सो दैट फूड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू द सेमी सॉलिड स्टेट। जब ये सेमी सॉलिड स्टेट, देन द फॉर्मेशन ऑफ फेसेस टेक्स प्लेस इन द rectum. And after them the rectum, when the faces are formed, faces are discharged here through the anus. Here anal sphincter muscles are there. When the rectum is full out with the fecal matter, then we eject it out daily, we flush it out. The undigested food material is given out of the body. That completes your, see, once you have the regain, we take the food in the mouth. Here mechanical digestion occurs, where larger food particles are broken down into the smaller particles by the teeth, tongue and the mouth cavity, palate, etc. Here salivary glands are present, saliva is secreted, saliva is mixed up with the food, so it binds all the food particles together. And salivary gland, the saliva, it contains ptyalin enzyme, that is the salivary amylase, which acts on carbohydrate. Here the digestion of carbohydrate starts in the mouth if you chew the food for the longer time. Then after that, food from here move to the esophagus tube. It is 25 centimeter long. It has mucous glands so that the food can be easily slipped out. And here circular muscles, they have a wave-like motion. This wave-like motion, it is known as the peristalsis. Through peristalsis, food is slipped from the esophagus tube into the stomach. In the stomach, that is considered the three part: cardiac, fundus and the pyloric. Cardiac sphincter muscles are present where the esophagus and the stomach at the joint, and pyloric muscles are present at the joint of the duodenum and the stomach, and fundic is the part where the food lies in the stomach. Stomach में food 2 से 3 घंटे रहता है। Stomach में gastric glands होती हैं, gastric gland में gastric juice secrete होता है, जिसमें कि HCl होता है, pepsin होता है और renin होता है। HCl that makes the medium of the food acidic, क्योंकि pepsin और renin acidic medium में ही react कर पाएंगे enzymes में। तो pepsin जो होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट्स as it is रहते हैं, और renin that is the milk protein in the children that is changed into the procasin protein is changed. फिर यहाँ से फूड जो आगे आता है duodenum में पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, पैंक्रियाटिक juices and bile juices आते हैं। bile juices, bile secrete that makes the medium of the food alkaline, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होंगे। तो ये अल्कलाइन मीडियम में ही जो ये फूड के जो पैंक्रियाटिक जूस के ऐसे होंगे, जैसे ट्रिप्सिन है, एमाइलोप्सिन है, टाइमोट्रिप्सिन है, जो इसमें इंक्रीज होते हैं। तो वो अल्कलाइन मीडियम में ही एंगलेट होकर के फर्दर फूड होते हैं। जो ये पॉलीपेप्टाइड्स चेंज होते हैं, जो पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, और जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फर्स्ट एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अकर बाय द बाइल, जिसमें कि लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। लाइपेज एंजाइम्स होता है, जो लाइपेज जो होता है, लाइपेज ट्रिप्सिन, इट इज वन एंड द सेम। लाइपेज ट्रिप्सिन में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ फैट्स के ऊपर तो जो फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फूड के जैसे उसके बाद हाफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम हियर पासेस इनटू द इलियम। यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, दैट इज द ये पॉलीपेप्टाइड एराप्सिन एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और ये जो इंटेस्टाइनल जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन ही होता है मेन, तो ट्रिप्सिन जो होता है माल्टेज, जो आपका शुगर जो माल्टेज है, माल्टेज को ग्लूकोज में चेंज करता है। शुक्रेज जो केन शुगर होता है, केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, और शुगर ये लैक्टोज दैट इज द मिल्क शुगर जो होती है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है। और लेफ्ट ओवर जो फैट्स होते हैं, तो एमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, जो लाइपेज एंजाइम है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो उसके बाद यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो विलाय के द्वारा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और विलाय के बाद फिर इट इंटरेक्ट्स एंड फॉर्म्स अ बॉडी, दैट इज द एसिमिलेशन, द लास्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन अकर्स ओवर देयर। तो उस एसिमिलेशन इंटरेक्ट मतलब ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में यूज़ करते हैं हम उसको एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बर्न आउट सेल्स को रिपेयर करते हैं, रिपेयरिंग सेल्स होते हैं, या ग्रोथ में है तो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स उसमें होता है। हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, और जो एक्सेस ऑफ द जो होता है बाकी डिओमिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है।
फैट्स जो होते हैं, जो हमारे फैट कुशन की तरह काम करते हैं, दे हेल्प इन गिविंग द एनर्जी। अगर नहीं है तो वो एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होते हैं, और दे विल बी डिसॉल्व व्हेन वी आर डूइंग द फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क जब हम करते हैं, वी आर डूइंग द फिजिकल हार्ड वर्क, एट दैट टाइम दे आर एब्सॉर्ब्ड एंड गिवन आउट ऑफ द बॉडी. So that is what all about your digestion. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video with another topic. Thank you.